Bureau of Indian Standard, Patna Branch Office organized a quality conclave with large and medium industries on 9th January 2025 at Hotel Vijaya Tej Clark's Inn, P&M Mall, Patna in the series of celebrations for Foundation Day of BIS Shri Vijay Kumar Sinha. Deputy CM of Bihar was the chief guest. Shri KPS Keshri, President BIA, Shri Subhash Patwari, President Bihar Chamber of Commerce, Shri Jaiprakash Narayan, Chairman, Institution of Engineers, Dr. Satyajit Kumar Singh, President CII, Shri CSS Rao, Joint Director MSME DFO Patna, and scientific officers of Patna Branch Office and Patna Lab were also present. Shri Kaushik Dadahead, PBOL, Scientist D. Manoj B. Chauhan, Scientist D. V.K. Gauro, Scientist C. Himanshu Kumar, Scientist C. Sudhanshu Suman made presentation on shaping the future of standards and quality digitization, etc. Honorable Deputy Chief Minister inaugurated the program and delivered a speech on need for standards. Approximately 270 participants from industries associations, departments, engineers, and members of chambers of commerce, media personnel were present. Booklet of Learning Science via Standards was also released by Honorable Deputy CM during the program. श्री एस.के. गुप्ता सर को और सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि सर आपके द्वारा तो बहुत जल्द मैं सर को आपके बीच बुलाने वाली हूँ जो कि स्वागत करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शाखा कार्यालय की ओर से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी बिहार के गणमान्य उद्योगपति और उद्योग संघों के प्रतिनिधि और इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि जो इस वक्त यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी की ओर से हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। Established the chair of standardization on the 18th of January 2023. And we had 17 of our premier institutions, IITs of Madras, Kanpur, Bombay, BHU, Patna. Let's hear what they had to say. This is a wonderful initiative. So I can't recall when did HODs of a particular discipline of so many engineering colleges come together to discuss standards and curriculum. We now realize how we can contribute to the standardization ecosystem by taking up R&D projects. I am in full agreement that association with technical committees of BIS is an opportunity for professional development of faculty. Increasing our international footprint has witnessed equally energetic process reforms. Categorization of the ISO IEC projects in accordance with their level of interest, designating experts against each of the projects of the high and medium level. The opportunity to introduce our chief guest, Honorable Shri Vijay Kumar Sinha sir. आज काफी गंभीरता के साथ और बड़े सीरियस होकर गुणवत्ता के प्रति आपकी सजगता को हम नमन करते हैं। भारत में मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित श्री एस.के. गुप्ता निदेशक BIS पटना शाखा, श्री कौशिक दत्ता निदेशक BIS पटना शाखा प्रयोगशाला, परम श्रद्धेय अभिभावक श्री KPS केसरी अध्यक्ष BIA, परम श्रद्धेय अभिभावक श्री सुभाष पटवारी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री CS राव संयुक्त निदेशक MSME, श्री जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, श्री सत्यजीत कुमार सिंह अध्यक्ष CII, यहाँ उपस्थित सभी अपने क्षेत्र में नए मानक
के साथ विशिष्टता को प्राप्त कर विशेषता बताने वाले हमारे नौजवान मित्रों, उद्योग जगत से जुड़े सभी महानुभाव, आज प्रामाणिकता, गुणवत्ता और कीमत की दुनिया के किसी भी कोने में सफल व्यवसाय के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसकी प्रामाणिकता, जिसकी गुणवत्ता और कीमत पर कंट्रोल है, वही सक्सेसर है, वही सफल है। और ये सफलता का सबसे पहला आधार बनता है। आप देखेंगे कि एक चाय बेचने वाला भी चर्चा में आ जाता है अगर जो उसमें गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होता है। तो फिर डिस्टेंस, खास करके ना सिर्फ इस कार्यक्रम में आए बल्कि हम सभी को संकल्पित भी किया, और हमारे अंदर हम में से कईयों में इनमें से कई सारी बुराइयां युक्त होंगी, तो आज हम उसका त्याग कर दें और माननीय सर के सभी संकल्पों का पालन करें, यही आशा एवं विश्वास करती हूँ। Preparing standards that espouse the ESG principles and align with SDGs is increasingly becoming more critical. Representation of diverse cultures, sectors, geographical regions, and all the while being culturally sensitive while accommodating everyone's concerns and finding common ground is also an important challenge for standardization community. Further, the importance of standardization and maintenance of quality in its products and services is now being seriously looked at by industry professionals. However, same cannot be said about consumers. Consumers are still driven by convenience, ease, affordability, and during the interplay of these factors, quality often takes a backseat. The people who were present today, first of all, I would like to thank Shri S.K. Gupta sir, head of Patna branch office, for giving the welcome address. Then I would like to thank Shri Kaushik Datta sir, head of Patna branch laboratory, for giving opening remarks. I would like to convey thanks to Shri KPS Keshri, President BIA, for giving keynote address. Then I would like to convey thanks to